So if you're passionate about food and nutrition, or you want to do a startup in future, but in this course there are 2 field placements, because non-commercial are retirement homes and long-term care homes, and jails also sometimes. Okay. And she was coordinating online, and she helped us a lot. For dietary aid, you can max $30 an hour job as a cook, which will pay $50 to $65. हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन कनाडा। ठीक है, नर्जिस है मेरे साथ, तो इनको हेलो बोल दीजिए। और पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दो कि क्यों ये प्रोग्राम सिलेक्ट किया, इंडिया में क्या किया हुआ है आपने, और वो सब। Reason I went for this program is because I was really passionate about health and fitness and nutrition, and I wanted to be a dietitian. So dietetics के लिए this was a pathway, and it's not just a pathway to dietetics but many other fields as well. Okay. इंडिया से क्या किया हुआ आपने? ग्रेजुएशन की हुई है? Yeah, I completed my 12th grade, and then after that I did a bachelor's in food science and nutrition, which is BSc. And then after that I applied for this program. तो जब आप 12th से ग्रेजुएट हुए थे, आपको कभी ऐसा लगा था कि लाइक आपने उस टाइम पे सोचा था कि यू विल बी कमिंग टू कनाडा, और उस टाइम पे आपका ये फोकस था कि यू विल बी गेटिंग ग्रेजुएशन, के ये था कि ग्रेजुएशन करके कनाडा जाऊंगी, लाइक I had no clue at that time. I was not in India. I did my 12th in Riyadh. And I was like, I have to do something in dietetics. Then eventually I planned to come here. And तो आप ग्रेजुएशन हो चुकी है? Yeah, I recently completed my program, food and nutrition management. Let's come to the question. Yes, सबसे पहला, why did you specifically chose this program? Like आपका मेन मोटिव क्या था इसके behind? Like was it, लोग बहुत क्या करते हैं कि एजेंट्स ने बता दिया, वो कोर्स पिक कर लेंगे और आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आके पता चलेगा कि अच्छा ये तो अच्छा है नहीं। तो फिर क्या रीजन था आपका? क्या रीजन? So yeah, I would suggest, don't just go for any program someone suggests. Read about it. The reason I went is because it says food and nutrition management, and I did BSc in food science and nutrition. So you see, it's closely related to it. And I truly checked the program case ke requirements, and then future mein I can go for dietetics or not, or what other pathways are there. And then I decided that I'll go for this program. So if you're passionate about food and nutrition, or you want to do a startup in future related to restaurants, or facility design, or health sciences, you can go for this program. Is it a postgraduate program or is it a undergraduate program? That means कि कोई 12th से graduate होके भी ये program को ले सकता है, या फिर ये mainly for those who are after bachelors? It's a postgrad diploma. So the requirement is you should have done a degree or diploma in the related field, like BSc or food science. But if you still want to take admission, you can give references or work experience proofs provide kar sakte hain, then they will take you. But I would suggest just come after your bachelor's or doing something in food science, and then go for this program. Currently, do you do any part-time job? Yes, I was working in a retirement home. It was a part of my field placement. That's how, mostly you can work in retirement homes during your course as well. हाँ, मेरी एक और फ्रेंड है, शी इज आल्सो इन द सेम प्रोग्राम। वो एक साल का ही है, Yes, तो शी it's आल्सो around 8 months program. हाँ, सो इसमें उसने क्या किया कि शी गॉट अ जॉब एट लाइक अ फील्ड प्लेसमेंट जॉब एट रिटायरमेंट होम, और वहीं पे वो पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दी। और जब अब वो कहती है कि जब वो ग्रेजुएट होंगी तो वो उसको फुल टाइम हायर कर लेंगे। Exactly, that is good prospects. After your graduation, you can also end up being a nutrition manager or something like that in the same place. Because this is a CSNM accredited program, right? So if you're a member of CSNM, which is Canadian Society of Nutrition Management, so you can be a nutrition manager in the future. इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर कोई भी स्टूडेंट ने ये प्रोग्राम उठाना है, उसके कितने नंबर आए होने चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर उसके आइल्स में कितना स्कोर होना चाहिए? It's not that tough. इतने hard requirements नहीं है to get in. They won't check your like you should just have good record, but they might see your bachelor results. Basically, you should have a bachelor's done in the same field or related field. That is the main requirement. And IELTS of above 5.5 or above 6.5 in every. हाँ, अब ये तो हर कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है। कई कॉलेजेस ऐसे हैं कि 5.5 पे भी ऑफर लेटर्स दे देते हैं, तो वीजा आ जाता है। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो यू नो लाइक दे नीड 7 एज वेल। सो कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है, और आपके लक पे भी डिपेंड करता है कि वीजा आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत ही चीजों पे जॉर्जियन का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? फॉर IELTS इन पर्टिकुलर आई डोंट थिंक सो, बट इट शुड बी अ गुड 6.5 के अबव इन एवरी।
लोगों को ये भी नहीं पता कि कोऑप, फील्ड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस होता है. सो इसमें फील्ड प्लेसमेंट होती है, राइट? इट्स नॉट अ Yes, कोऑप yeah. प्रोग्राम. So in this program, there's no co-op. Co-op is basically जो course खत्म होने के बाद there's a period of 4 months, which is assigned as a co-op. Yeah. But in this course, there are 2 field placements, Okay. one in the second and one in the third semester. Okay, okay. So it gives you a good opportunity of building your network in the field, you know. सेम मेरे ही प्रोग्राम के साथ भी था जब मैं फिटनेस Okay. एंड हेल्थ में था. नेसेसरी नहीं है कि वो Yeah. पेड वर्क ही हो या किसी भी ओल्ड एज होम में ऐसा काम करना पड़ेगा, विच इज जस्ट लाइक अ वॉलंटियरिंग. बट इवेंचुअली यू नो मोर एक्सपीरियंस यू गेन इन द इंडस्ट्री. Yes. आपको थोड़ा वो इजी हो जाता है उसी Yeah. फील्ड में जॉब. लेट्स से हमारे सामने पीछे वाली साइड ना एक न्यूट्रिशन स्टोर भी है. तो Okay. न्यूट्रिशन जैसे सप्लीमेंट स्टोर आ जाते हैं फिटनेस वाले, वहाँ पे काम करना वो एज अ कोऑप, एज अ फील्ड प्लेसमेंट काम होएगा इस You program? can definitely work there, experience, but I don't think that will count as a field placement. Okay, Because okay. you have to be working in a kitchen facility. Non-commercial is essential. Okay, Because okay, okay. non-commercial are retirement homes and long-term care Oh, okay, homes okay. and maybe jails also sometime. ओके ओके. सो ये But उन पे ज्यादा फोकस्ड है yeah, जो they're focused in रिटायरमेंट. working in the kitchen, ओके dietary ओके. aid. व्हेन वी टॉक अबाउट फील्ड प्लेसमेंट, इसमें कैसे रोल्स, लाइक किस टाइप की आपको जॉब्स मिल सकती हैं, क्या क्या आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी जो आपको यू नो एक्सपीरियंस गेन करवाएंगी इस फील्ड में? सो Yes. उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. So mostly if you work in a retirement or long-term care home, you will be given the role of a dietary aid, which is more like serving the residents, dealing Yeah. with them one-on-one, checking their food lists if they have any allergies or any diabetic or any other disease or health conditions. Okay, And then okay. accordingly you serve them that food ओके ओके. which the kitchen gives to you. You don't Okay, have to okay. cook initially, and that's how you learn more about menu planning, Okay, okay. serving, handling food, and Okay, everything. okay. Basically, it's an overall experience. दोस्तों, इस फील्ड में कोई अच्छी इंटर्नशिप या कोऑप ढूंढने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ फूड हैंडलिंग कोर्स और सर्टिफिकेट. उसके ही साथ साथ एक अपना बैकग्राउंड चेक जरूर करा लेना और पुलिस क्लियरेंस चेक बहुत जरूरी होगा करवाना, तो ये दो प्लीज करवा के रखना. ओके ओके. सो इसी से मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है क्योंकि मुझे भी एक कंफ्यूजन है. एक Sure. प्रोग्राम होता है फूड एंड न्यूट्रिशन इंस्पेक्शन, कुछ ऐसा रिलेटेड. Yeah. तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है ये दोनों Yeah, that programs is में? basically more related to quality assurance Quality and assurance. food inspection से related है. Okay, This okay. is more health and nutrition and kitchen designing and startup okay, से okay. related. It's all like hospitality and nutrition, ओके both ओके. in तो this. इसमें ग्रेजुएट करके आप किसी को डाइट प्लान्स वगैरह भी बना के दे सकते हो? Not immediately because yeah, the system here is a bit tough. Okay. So if you want to go into dietetics You have in to get a particular, certification. you have to clear 2 exams, that is Okay, okay. KCAT and CDRE, Okay, and then okay. you do a human nutrition course for a year, and then you're a member of the dietetics Ontario College of Dietitians Ontario, ओके ओके. and then you are supposed to do an internship under a dietitian, and Okay. then you become a dietitian. So Okay. that is long. तो Yeah, हाँ, तो काफी that's a लंबा long सिर्फ path. practice. Yeah, that's हाँ, a long तो path. अगर आप इंडिया में हो, आप तो किसी भी जिम में चले जाओ, वो डाइटिशियन खुद को बताते हैं, बट Yes, यहाँ पे ऐसा exactly. नहीं है. It's not here. So if you really want to be a dietitian and you don't want to put so much of time in this, so I think you should complete your dietetics in India because that's much easier. हाँ, And then time work कम and waste then होएगा. come here and then you can be a dietitian here Right. easily because you've done all those things in Yeah. India. ये एक साल के प्रोग्राम में आप ये बताइए कि स्टडी सिस्टम कैसा है, लाइक असाइनमेंट्स कैसी होती हैं, कितना प्रैक्टिकल पार्ट है, कितना थ्योरेटिकल पार्ट है, और क्लास स्केड्यूल कैसा होता है, कितना बिजी होता है, मतलब कितनी यू नो वर्कलोड Yeah. कितना है ओवरऑल आप क्लास के बारे It's में? not a lot of workload. Assignments are tough in the beginning, like the clinical nutrition subjects. If you're into clinical, you will be able to do it easily. But it was a bit tough for me because I just did my bachelor's. But it's good. You have good teachers who'll explain it to you in detail, everything, and then you can work on it. You can take help of your fellow mates, classmates as well. Yeah. And the teachers are very cooperative. In particular, I had this food modifications professor, Yuan. She was very cooperative because he started a course back in India due to the lockdown, and she was coordinating online and she helped us a lot with that. Okay. So we have good professors here who will help you out with assignments, ओके ओके and it's a lot of practical. They are preparing you for the practical world. ओके. How you're going to work, food handling, quality assurance, clinical nutrition, and then business startups related to food. ओके. So it's more practical knowledge. जो कि अच्छी बात है, यू नो. कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो आप बच्चों को कहोगे कि भाई अच्छे से पढ़ लेना नहीं तो फेल हो जाओगे, लाइक जैसे मेरे फिटनेस एंड हेल्थ में था
काफी Okay. लोग फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में फेल हो जाते थे, तो मैंने वीडियोस में ये बताया हुआ है कि अच्छे से पढ़ना वो वाले। आप Okay, ऐसे so कोई it basically depends on person to person. हाँ, I think for most people, clinical nutrition would be this kind of subject. ओके But ओके for me, it was not that bad. I could clear it easily. But food service management was a bit tough for me because it Okay. has some assignments like marketing analysis and stuff like that, ओके in ओके which you have to write about the real world market, but you can't copy their actual data. Otherwise, they'll call it plagiarized. हाँ, प्लेजरिज्म यहाँ Yeah, पे and there's some Excel assignments on food Okay, and okay. nutrition, food service management. या तो So, यही पॉइंट मुझे दूसरे पॉइंट पे yeah, लेके आता है, प्लेजरिज्म। दैट्स अ मेन इशू। बहुत ही स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, असाइनमेंट्स कॉपी, नॉट ओनली कि अब प्लेजरिज्म सिर्फ ये नहीं है yeah, कि आप दूसरे स्टूडेंट से कॉपी करोगे और आप आप चीटिंग कर रहे हो, plagiarize. हाँ प्लेजराइज हो। इवन दो यू कॉपी एनी रिसोर्स, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्स, आर्टिकल है या कोई भी स्टडी है, वहां से तुम कॉपी करके लिखते हो विदाउट प्रॉपर रेफरेंसेस, विदाउट पैराफ्रेजिंग, वो भी प्लेजरिज्म होती है। That's plagiarism. उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप एपीए फॉर्मेट अच्छे से समझो होता क्या है। Yeah. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कॉलेज लाइब्रेरी होती है, Yeah, या there अपने are so प्रोफेसर्स को many जाके sources in the हाँ, college. उनको जाके प्लीज़ कांटेक्ट करो, क्योंकि कभी कभी आपको पता ही नहीं होगा, इवन दो यू आर नॉट चीटिंग, क्योंकि हम इंडिया के हिसाब से हमें लगता है कि ये चीटिंग नहीं है कॉपी करके लिखना या Yeah. किसी और की वर्डिंग्स लिखना, बट यहाँ पे वो है। तो उसके लिए आपको प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से गो थ्रू करो उससे। Yes. वंस यू डू ऑल द सेमेस्टर, जब आप सब पढ़ाई कर लेते हो इस प्रोग्राम में, कौन से ऐसे की एस्पेक्ट्स हैं जो आपको सीखने को मिलते हैं, जो आप अप्लाई करोगे रियल वर्ल्ड में, रियल फील्ड एंड न्यूट्रिशन? So many parts in clinical nutrition, which was like diet planning and assessing a person's diet recall and everything. Those things we can really use in our day-to-day life as well. If you're a fitness freak or something like that, you can use it in your daily life. Yeah. And in future, when you are a dietitian, you can apply those things, those knowledge aspects. And then there's facility design also. You'll know how a kitchen works actually. It's Yeah. not just as simple as we see from outside, Yeah. but it's a lot of detail that goes into it. Okay. So I was amazed to know about all that when I studied facility design. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट किचन डिजाइन, ये हो कि हाउ किचन वर्क्स, अगेन मेरी पुरानी वीडियो में मैंने अरमान से ये बात की, उसका प्रोग्राम था हॉस्पिटैलिटी, Hospitality, ठीक है, right. और होटल मैनेजमेंट एंड रिसोर्ट। सो उससे ये किस सेंस में डिफरेंट है कि किचन मैनेजमेंट वहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, बट क्या डिफरेंस है? So the thing that I didn't know, I got to know about it later, is that my program is also considered as a part of hospitality. Yeah. It comes under hospitality and tourism. The part where it differs is that we are not studying hospitality completely. We have some nutrition subjects. Yeah. So that is how it makes it different. So we just learn about the structure of the kitchen and everything. Okay, okay. We don't do all the hospitality practicals like cooking and all that. But we just have a basic introduction of all these kind of. बुक्स, लैपटॉप्स और कोई किट्स ये चाहिए इस प्रोग्राम में मैंडेटरी So, परचेज करने के लिए? Yeah, in the first semester we have finance and accounting, which is surprising. That is a tough subject for students who just studied home science and stuff like that. Okay, But okay. for that we have to purchase a book which cost me 6,000 rupees in India. Okay. I guess $110 or something ठीक है, from फोटो here. पढ़िए उसकी, It's कोई an बात नहीं, वो online मैं- book. ना, It's ना, not a हाँ, literal hard ठीक है, copy. ठीक है, Yeah, वहाँ से the purchase professor करने will के लिए। provide you the link and sources for that. So the Okay. entire course is on that. इसका ये भी होता है कि ना, अगर किसी बुक की जरूरत नहीं है खरीदने की तो मत खरीदो, क्योंकि पैसा आ जाता है। यहाँ पे Yeah. बुक्स काफी महंगी है। मेरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की $200 की बुक थी, तो Okay. मैंने तो वो कभी खरीदी नहीं। So Crazy. we had clinical nutrition and food modifications for which we referred books, but these books are available online for free as well. Okay, They okay, are फिर तो paid, अच्छा but we have free PDFs हाँ, available. हाँ, वो तो So they are सही है। dietetics and food and nutrition related books. हाँ, और आपको That's लाइब्रेरी it. से भी मिल सकते Yeah, हैं, you कॉलेज can की get them लाइब्रेरी from से the भी, library as तो well. आपको पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, अनलेस Yeah. कि प्रोफेसर आपको बोले कि हाँ भाई ये मैंडेटरी है, Yeah. खरीदो ही खरीदो। The मत only ही खर्चो। mandatory book in the entire course is finance and accounting, which Okay, you okay. have to buy that. Which you have to. कोई स्पेसिफिक किट चाहिए इस प्रोग्राम के लिए, लाइक फिटनेस एंड हेल्थ के लिए मुझे वो स्टेथोस्कोप वगैरह, वो Oh, ब्लड okay. प्रेशर मैनेजमेंट, वो सब चाहिए होता था। Okay. तो कोई किट चाहिए इस No, प्रोग्राम we के लिए? did not use any kind of kits in this program. यूनिफॉर्म भी नहीं कोई? No, no. Only when you work at some Yeah, place and they वो तो will. अलग सिस्टम। No course related ठीक है। kits and stuff. Yeah. और स्टूडेंट्स ये भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि लैपटॉप्स कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आके उनको ना परचेज Yes. करना होता है। तो आपको कोई स्पेसिफिक लैपटॉप इस प्रोग्राम के लिए नहीं परचेज करना? Not specific, but laptop is the
is a very is easy. the entire thing in Yeah, this yeah. course, I would say. Okay, Because okay. every assignment, everything, like we have certain assignments where we go on sites and we check the entire stores, like Longos, we had to refer to Longos. Okay, okay. So सब कुछ It's a मतलब वो ऑनलाइन shopping लैपटॉप्स website. पे ही होता Yeah, है. everything is with the हाँ, laptop that means for कि this कोई course. आपको हाई फाई लैपटॉप नहीं लेना, जो No, भी it बेसिक can be a लैपटॉप है basic चले. laptop. उसके अलावा देखो कॉलेज में भी लैपटॉप्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है आपको, Yeah, they और provide. लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर्स होते हैं. सो अगर आपके पास स्टार्टिंग For में लैपटॉप timing, नहीं है, yeah. हाँ, तो इट जस्ट गेट्स अ लिटिल बिट मोर Easier. कन्वीनियंट टू हैव अ लैपटॉप, ठीक है. सो रख लो अपने पास अगर है तो. जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है आफ्टर यू ग्रेजुएट, लाइक कौन कौन से जॉब टाइटल्स आपको मिल सकते हैं और उसकी पे रेट्स भी क्या होती हैं ऑन एन एवरेज? So if you just did graduation, you have no other work experience and you did this course, then I would say you can end up getting a job as a dietary aid. For dietary aid, you can max get $30 an hour jobs, and then eventually you can get a job as a cook, which will pay not more than, I guess, $50 to $65 if you're too Okay, okay. lucky. And then if you get registered with CSNM and you be a nutrition manager, then you can increase your post. कोई फाइनल एडवाइस, आपने ये पूरे साल में क्या सीखा, और वो कोई मिस्टेक्स अगर ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स ना तो हैं, सो उसके बारे में बता दीजिए. Okay, so it's a general advice that you coming here to learn something new, be something, and these programs are going to help you get there. But sometimes things get hard. या तो assignment से related or else related to work. But the path to success is not always easy. So Yeah. I would just say hang in there. Try Yeah. to find solution to करते रहो. anything that हाँ. is a problem. Yeah. You can connect to teachers or any other. There are sources for mental health as well in our college. Okay, So you okay. can connect with them, get a solution to if there is any problem. If you want to be a dietitian in the future, if you want to do a startup, then I would say go for this course. You'll learn a lot of things in this basically. तो आई गेस दैट्स इट. बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने. होप Thank सो you. लोग Yeah, I पूरी वीडियो hope it देखेंगे. helps और to the people. हाँ, Yeah. और थैंक यू.